This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अल्लाह मदद फरमा, अल वाहिदुल कहार, अली अल्लाह मदद फरमा। या रिजवान या रिजवान, 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 या रिजवान। शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, 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 शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह,
Shukran lillah walhamdulillah. 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 Ya Ali Madad Aziz sir. या अली मदद बहुत खूब सुभान अल्लाह. Happy New Year to everyone. Good morning and thank you for joining us today. We will continue with our subject. Have we recognized and understood Imam as we should have? And we will start on day 10, but I would like to read and remind the friends online with this farman. Let's start with the Imam's blessed name. Nur Maulana Shah Karim Al Saini Hazir Imam, Ya Maulay Mehrban Madad Farma, Ya Maulay Mehrban Madad Farma, Alayul Qayyum Ali Allah Madad Farma. Nur Maulana Shah Karim Al Saini Hazir Imam, या मौला तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी मौला तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी मौला या मौला मेहरबान हम गरीबों की अपने नूर के साथ अपने खाना वदान रहमत के साथ ब्लेसिंग के साथ मदद फरमा मौला या मौला हमारे करीब आ जा मौला अपना हाथ हम गरीबों के ऊपर रख मौला ताकि हम कोई अच्छा इल्मी काम कर सके मौला या मौला मेहरबान या रहमान व रहीम मदद फरमा मौला. In the name of Nur Maulana Shah Karimul Saini Hazir Imam, please recite the holy salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bombay, India, Karimabad Jamaat Khana, Wednesday, November 22nd, 1967. My beloved spiritual children, I have told you
on many an occasion how important it is that if you learn part of the Quran, you should understand their meanings. It is important that if you recite or know parts of the Quran, you should be able to explain their meaning. Don't forget that our branch of Islam is an esoteric branch of Islam. Esoteric means that what is written is there, but its meaning is not there to everyone. It is there to those who are part of our Jamaat. And it is important, therefore, that if you learn parts of the Quran, you should be able to explain the esoteric meaning of those parts. Please recite the Holy Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. मुल्ला फरमाते हैं ये तकरीबन 60 साल पुराना फरमान है। इमाम ने अपने अर्ली वक्त के अंदर फरमान फरमाया कि अगर आप कुरान को पढ़ते हैं तो जरूरी है कि आप उनके मानी समझें और जो लिखा हुआ है वो सबके लिए है, यानी कि जो किताब है वो सबके लिए है, लेकिन इसके अंदर जो माने छुपे हुए हैं वो सिर्फ हमारी जमात के लिए है। क्यों कि हम इस्लाम का बातिनी तरीका है और कुरान का बातिन सिर्फ हमारी जमात के लिए है। The question arises, why is the esoteric meaning is the interpretation is the tawil is for our jamaat only? Because we believe in the tawil and we believe in the meaning. We do not recite the Quran as a parrot. हम तोते की तरह कुरान और कुरान की आयतें दुआ के अंदर या दूसरे मकामात पर नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इमाम की हिदायत और नूर की रोशनी में उसके मानी को समझते हैं। We do not read in our dua or other places. When and if we read Quran, we understand the meaning in the light of the guidance and the nur of the Imam, because it is only and only for us. And it is important that when we learn or read the Quran, we must be able to understand ourselves and we should be able to explain the meaning, the batini meaning, the tawil of those parts to others. Do not read or recite like a parrot. आप सिर्फ उसको पढ़कर तोते की तरह रट नहीं सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो उसकी मीनिंग है। So let's come to our day 10th, today's session. As you remember, while I was gone, you all did a ninth part
with a pre-recorded session on Surah Nur, Ayah Misbah, ayat number 35. Today we will notch up to 36 to show you what Imam just said in this Farman. The meaning is for our Jamaat and our Jamaat only. To all the Muslims, brothers and sisters, those who read Quran, Nuran Allah Nur to them is one Nur upon Nur. Nur upon Nur. For us, Nuran Allah Nur means Imam after Imam. पूरी दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए जो कुरान पढ़ते हैं, नूरन अला नूर का मतलब है एक नूर पर दूसरा नूर। हमारी जमात के लिए इसका मतलब है एक इमाम के बाद दूसरा इमाम। आपने देखा कि जब इमाम ने फरमाया द मीनिंग इज फॉर आवर जमात एंड आवर जमात ओनली, then the tawil of Nuran Allah Nur, the meaning of it, not the translation, one Imam after other, Imam upon Imam. With that, let's come to the next ayat from the very surah, Numbers 36. Where do you find this Nur? Where would you find this lamp? Where would you find this light? Quran says, in the homes which Allah hath allowed, given izn to be exalted, and that his name shall be remembered therein. कहाँ पर आपको ये नूर, ये रोशनी, ये चिराग इमाम का नाम मिलेगा? उन घरों में, उन मोमिनों के घरों में जहां पर इमाम का नाम लिया जाता है, जहां पर उसको याद किया जाता है। ये नूर आपको मोमिनों के घरों में मिलेगा, क्योंकि इन घरों में उनके याद को बुलंद किया जाता है। सुभान अल्लाह। You will find this nur in the homes where you praise and remember Ali Allah, where you recite your tasbih, where you remember Imam, where you recite your bowl, where you do your dua bandagi. In the momin's home, you will find, you shall find, you would find. Therein, they offer praise to him. We praise Imam as Zaman. When? One time a day, twice a day? No, all day long, in the morning and in the evening. All day long, you are mentioned, your homes are mentioned in the Quran if you are Mu'min, if you remember him in your homes
all day in the morning and evening. आपका जिक्र है कुरान में, सुभान अल्लाह। आपका जिक्र, आपके घरों का जिक्र किया गया कुरान में। अगर आप इसमें शामिल होना पसंद करें, अगर आप अपने घरों में इमाम का नाम लेते हैं, तस्बीह निकालते हैं, गिरियावजारी करते हैं, दुआ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, फरामीन को पढ़ते हैं, गिनानों को पढ़ते हैं, आपका जिक्र है कुरान के अंदर। देख लीजिए सूरह नूर आयत नंबर 36 के अंदर आपका जिक्र किया गया है। सूरह हदीद आयत नंबर 12 के अंदर, दैट इज 57:12, आपका जिक्र किया गया है। सूरह तहरीम 66 की 8 में आपका जिक्र आया है। सूरह अलहम्द आयत नंबर 5 के अंदर आपका जिक्र आया है। हम तो कुरान के अंदर खुदा और इमाम के नूर को ढूंढते थे, आपके नूर का जिक्र आया है, आपके घरों का जिक्र आया है, मोमिनों का जिक्र आया है कुरान के अंदर। क्यों? कि आप इमाम के वो मुरीद हैं जो अपने घरों में इमाम का नाम लेते हैं, दुआ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, गिरियावजारी करते हैं, फरामीन को पढ़ते हैं, गिनानों को पढ़ते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। यहाँ पर वार्निंग, I would like to put a warning here. If you do not recite dua, if you do not recite the Ism Azam, if you are not performing your duty toward the Imam in your homes, then your home is devoid of the Nur, and therefore you bring darkness into your Nur, into your homes. Let me tell you what you are doing in your home to bring darkness. If you are bringing those kind of ill dramas, TV episode, ill feeling towards the family, gossiping, gambling, all of those bad deeds which are against the Imam's farman, then you yourself are putting out the light and bringing darkness into your home. On contrary, you should follow the Imam's farman and bring the light by reciting dua, praising Imam through the Ginan and Faramin. Remember him, tasbiyat and ibadat and recitation of your bowl. You can bring the light into your home. Free will is given to us individually. फ्री विल हमारी है कि हम अपने घरों के अंदर चिराग को रोशन करते हैं या उसको बुझा देते हैं। इसकी चॉइस हम पर रखी गई है। फ्री विल हमारी है, जबरदस्ती नहीं है। आप अपने घरों में क्या करते हैं, इंडिविजुअली हमको देखना होगा। अगर हमारे घरों में वो ड्रामे चलते हैं जिससे हमारे दिलों में भाई बहनों, फैमिलीज के लिए कराहट पैदा होती है, हम अपने घरों में बैठ के दूसरे के पीछे बैक बाइटिंग, गिला गिबत करते हैं, हम अपने घरों में अंधेरा करते हैं। लेकिन इमाम चाहते हैं हम अपने घरों में उसके नूर की रोशनी को जलाएं, और कुरान में इसका जिक्र किया गया है। उसी के साथ हमको देखना होगा वर्ड
मुबीन को. What is the word mubin means? When we say Imam Mubin, when we say Noor Mubin, when we say Kitab Mubin, what does word mubin means? You all understand the meaning of bean, eyesight, clear, visible. क्या मतलब है मुबीन का? आप तमाम जानते हैं. बीन का मतलब है बिनाई, जिसको आप अपनी आंखों से देख सके. मुबीन वो चीज जो वाज़े तौर पर आपके आंखों के सामने है. इंग्लिश में इसको मैनिफेस्टेड कहते हैं, उर्दू में इसको जाहिर कहते हैं. आप इमाम मुबीन, इमाम को अपनी आंखों से देख सकते हैं. Imam Mubin, the Imam that you can see with your eyes, manifested Imam, clear, visible Imam. Just like that, Noor Mubin, that Noor which you can see with your eyes, clearly present and manifested Noor. नूर मुबीन, जिसको आप अपनी आंखों से जिस नूर को देख सके वाज़े तौर पर. किताब मुबीन, कौन सी किताब? वो किताब जो कागजी है, या वो किताब जो जिंदा, हाजिर और मौजूद आपके सामने मौजूद है? Which book? The book which has been printed in the papers, or book which is a living and present book in front of your eyes? The speaking book, the ayat, the symbols, the miracle of the manifested book. I would highly encourage you to read upon these three ayat and compare that everything is manifested in Imam Zaman. Everything is encompassed in the Imam Mubin. मैं आपको दावत देता हूं कि आप इन रेफरेंसेस को चेक करें कि इमाम मुबीन जिसके अंदर हर चीज समोई हुई है, और वो नूर जो हमारे सामने है, जिसको हमारे सामने हमारे दरमियान में उतारा गया है. और वो नूर, वो माजिजात, वो आयात जो हमारे सामने हाजिर और मौजूद है इमाम की सूरत में. आप देखें, पढ़ें, समझें. Don't just take my word, look it up. Open the Quran and see. Do you find three Mubin in the Quran? One being Imam Mubin, one being Noor Mubin, and one being Kitab Mubin. Everything is encompassed in Imam Zaman. You will find the Noor and the speaking book in the manifested Imam. आपको इमाम ही के अंदर नूर भी मिल जाएगा और बोलता हुआ कुरान भी, अगर हम देखना चाहें तो. ये किताब जिसका अभी हमने जिक्र किया, द बुक, द स्पीकिंग बुक वी जस्ट मेंशन्ड, is also mentioned in the Quran. I'm not saying anything to anyone without the reference of the Quran, without the reference of the Farman, without the reference of the Ginan. This kitab, this book is without the doubt. Which one? The printed book
or the living book? कौन सी किताब? जो कागजी किताब है या जो जिंदा हाजिर और मौजूद किताब है? Which book? Look up Surah Baqarah, ayat number 2. That book, not this book, the kitab, not the printed book, not this book, that book, that book has no doubt. It speaks truth. It speaks with the nur. It speaks clearly. There is no doubt in the speaking book. There is no doubt in the living book. There is no doubt with the book with the nur that is living and present in front of us. इस किताब जो प्रिंटेड की हुई जो कागजी है उसमें शक हो सकता है, उस किताब में नहीं जो जिंदा नूर के साथ बोलने वाला है. That is the book in which there is no doubt. Surah Baqarah as number 2. That book containing guidance for those who are mindful of God. उसमें हिदायत है उनके लिए जो इसके बारे में, खुदा के बारे में, इमाम के बारे में सोचने वाले हैं. जो नहीं सोचते हैं उसके लिए इसमें कुछ भी नहीं है. Those who are not mindful of Allah, mindful of Imam, mindful of Ali Allah, there is no guidance for them in this book. And there is nothing but the doubt. But those who are believer and who are mindful, who are mu'mineen, there is a guidance for them in this book. In the living, speaking, Nurani book, the Imam Zaman. Don't take my word for it. आप सिर्फ मुझे सुनकर खामोशी से ना बैठे, खुद जाकर कुरान के अंदर पढ़ लें और देखें कि क्या मैंने कोई गलत तो बयानी नहीं की. आप जाकर देखें. Again, that book is with the light. So that book is speaking, that book has no doubt, and that book is enlightened. Kitab-e Munir, Surah 31, Ayat 20. It criticizes some people, yet some people argue about God. This ayat about the Kitab-e Munir, the manifested, lighted, enlightened, Roshan book. खुदावन ताला कुछ लोगों को से गिला व शिकवा करता है कि फिर भी इतनी वाज़े किताब आपके सामने होने के बावजूद कुछ लोग इसमें आर्ग्यू करते हैं. Let me invite you to look to the left of your screen. They argue Imam is nothing but a human. Imam is nothing but a Hadi. Imam is nothing but a Noor. They are ashamed and shy away from Imam is Ali Allah. Yet some people argue about God, the Ali Allah. You know why they argue? Without knowledge or without guidance or without understanding the truth. Very powerful statement.
Again, don't take my word for it. Look it up yourself. Find this ayat in Quran. इल्म के बगैर, हिदायत के बगैर, समझे बगैर, सच्चाई के बगैर वो आर्ग्यू करते हैं कि इमाम को अली अल्लाह ना कहो, इमाम कुछ भी नहीं है मगर एक इंसान है, एक इंटरसेसर है। उनके पास सच्चा इल्म नहीं है, उनके पास सच्ची हिदायत नहीं है, उनके पास नूर या उसकी समझ नहीं है, उनके पास सच्चाई नहीं है, तब जाके वो आर्ग्यू करते हैं। They argue because they have no knowledge. What did Imam says? The batin is for us. The meaning is for us. The tawil is for us. They have no knowledge of that. So they argue. They have no guidance. So they argue. They have no understanding of the truth. So they argue. They are nothing but the blind and deaf and dumb. Surah 17, Ayat 72. आपका जिक्र कुरान में है, उनका जिक्र भी कुरान में है। आपके घरों में इमाम के नूर की रोशनी है, उनके घरों में अंधेरा है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी है। वो अंधे हैं, वो बेरे हैं, वो गूंगे हैं। सूरा 17 आयत 72 आप जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जमाने के इमाम को नहीं जाना, नहीं पहचाना। They did not accept the Imam Zaman, Imam Mubin, the speaking and Nurani book. Don't take my word for it. Look up the Quran in the light of the Imam's Farman, Imam's Nur, Imam's guidance. I cannot make more stronger point. I cannot give you more better argument in the favor of the Imam and the book and the Nur. But individually, we have a responsibility as the murid of the Imam to read, understand the Farman. Then go into the Quran and look up these references. If you don't understand, ask. Ask. We will not shy away from answering. But responsibility is with us and with us only. Again, what does it mean by Kitab-e Munir? A Roshan, clear, visible book. क्या मतलब है कुरान है और किताब मुनीर का? क्या वो कुरान जो हमारे हाथों में है उसमें से कोई रोशनी निकल रही है? वो क्या लाइटेड है, उसके अंदर कोई लाइट लगी हुई है? The book that is in front of us, does it, when you open, a light comes out? Have we installed any kind of electricity in this book? What does Kitab-e Munir means? Imam is that speaking and lighted Kitab-e Munir because of the Noor in him. The Noor in him. How do we understand
and receive the knowledge that here it spoke about. The knowledge. How will we see that Kitab-e-Munir in the Imam? With and only with ilme hakiki, ilme laduni, ilme imam. किस तरह से हम इमाम को एक रोशन किताब की तरह देखें, समझें? नंबर 1, विथ इल्म. कौन से इल्म के साथ? इमाम के इल्म के साथ, इल्म लदूनी के साथ, सच्चे इल्म के साथ. एंड वेयर डू वी फाइंड दिस नॉलेज? कहां पर हम इस नूर, इस इल्म, इस सच्चे इल्म को, इल्मुल यकीन को ढूंढने जाएं? कहां पर मिलेगा ये इल्म? ये इल्म दाई है. ये इमाम के उन दाइयों से मिलेगा जो माजी में और जाहिर में इमाम के हकीकी इल्म तक पहुंच चुके हैं. एंड दे स्पीक with certainty, with ilmul yaqeen, with the certainty of knowledge. Where do you find this ilm? Through the eyes of the past and present. The one who have reached to the level of ilmul yaqeen and have actualized themselves as the true Dai of the Imam, and they speak with certainty of knowledge, with ilmul yaqeen. If you don't understand this point, raise your hand and ask. And then, where do you find that hidayat? Remember, the second was guidance. Where do you find this guidance, this hidayat? Where do you find it? The hidayat comes from hujjat ya peer, because they are not only with the certainty of knowledge, but they are with the anul yaqeen, with certainty of eyes, of the vision, of the spiritual experiences. What I'm telling you, you may have never heard of this before. वो हिदायत, वो हकीकी हिदायत हमें पीरों से, हुज्जतान से मिलती है, क्योंकि वो ना सिर्फ इल्म के अंदर मुकम्मल होते हैं, बल्कि वो रूहानियत की भी सूझ बुझ रखते हैं. Let me remind you of that farman. Imam Aka Sultan Muhammad Shah, Salawatullah alayhi, may our soul be sacrificed to that Imam. In one of his farman says, who can be a teacher? The one with the complete knowledge, the certainty of knowledge, ilmul yaqeen. And along with that, have some understanding of spiritual experiences. कौन? जो इल्म में मुकम्मल और रूहानियत की भी सूझबूझ रखता हो, उसको हुज्जत और पीर कहते हैं हम, क्योंकि उनके पास
रूहानियत का खजाना भी और इल्म का खजाना भी। इमाम का इल्म भी, इमाम का नूर भी वो रखते हैं अपने अंदर, तब जाकर वो किसी को गाइड कर सकते हैं। पीर पूछिने चालवानो, पीर is the one who guide us because they have two things, ilmul yaqeen and ainul yaqeen, certainty of knowledge and certainty of eyes, spiritual experiences. My brother and sister, my friends who are with me today and who will listen to this in the future, please, I urge you to think about this. Who can teach? Who has the ilm? This ilm, the ilmul yaqeen, the true ilm, ilmul laduni, certainty of knowledge. And who has certainty of eyes, spiritual experiences. And the last come, Kitab-e Munir. Who is Kitab-e Munir? कहां पर है ये किताब मुनीर? कहां पर ढूंढने जाएं? कहां पर मिलेगा ये किताब मुनीर? Where is this किताब मुनीर? Where should we look and where would we find? किताब मुनीर is the Imam Zaman, and he speaks with Haqqul Yaqeen, certainty of truth. Certainty of truth. So those who have certainty of knowledge, those who have certainty of eyes, those who have certainty of truth, those who have a ilm of the dai, spiritual experiences of peer, and the certainty, the truth of the imam are the mu'mineen. Vice versa, those who are without the knowledge, without the guidance, and without the understanding of the truth, just argue, falsely argue, and they will tell you, do not call Imam Ali Allah. Imam is nothing but a human like you. They will argue against the Imam, against your Iman. But those who has the ilmul yaqeen, those who have ainul yaqeen, and those who have haqqul yaqeen, the dais, the peers, and imam can teach you, can guide you, can show you the haqq, the truth. जिसके पास ना तो दाइयों का इल्म है, ना ही पीरों की रूहानियत है, ना ही इमाम का नूर है, वो आपको कहेंगे इमाम कुछ भी नहीं है, इमाम एक आपके जैसा इंसान है, इंटरसेसर है। लेकिन जो दाइयों का इल्म रखता है, पीरों की एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस रखता है, इमाम का नूर और इल्मुल हक्कुल यकीन रखता है, वो आपको कहेगा इमाम अली अल्लाह है। आप उसके अंदर फर्क करना सीखें। You should be able to learn and able to see who is with the ilm, who is with the spiritual experiences, and who is with the nur, versus those who will tell you Imam is nothing but a human. They have no knowledge, no spiritual experiences, and no nur from the Imam. You should be able to learn and be able to differentiate between these two people. When you listen to them, be mindful of that. Be mindful of that. Who is guiding you toward the Imam and who is taking you away from the Imam?
You should be able to judge. My brother and sister, all these 10 chapters to date should be able to answer your question. And what was the question that was asked in the very first session? How do you see it? That was the question we began 10 weeks ago. How do you see the Imam? Do you see the Imam as a human? Do you see Imam as a Hadi? Do you see Imam as a Nur? Or do you see Imam as Ali Allah? That was the question. And how do you answer that? With this, with ilmul yaqeen, certainty of knowledge, the knowledge of the Dai. How do you answer that? With ainul yaqeen, certainty of eyes, with the spiritual experiences of the Peer. How do you answer that? With the Noor-e Imam, with Haqqul Yaqeen, with the certainty of truth. After this, that question and the answer should come easy to us, without any doubt, without any doubt, without any argument, without any question. Inshallah Ta'ala, may Mola be with all of us. May Mola guide us on Siratul Mustaqim. May Mola shed the light of His Noor on our path so we can see and walk and elevate on the Sirat al Mustaqim. May our spiritual experience be brighter and more brighter day by day. May this new year bring you lot of happiness, lot of spiritual happiness, lot of worldly happiness, lot of intellectual happiness in your heart. May Mola and His Noor be with you always and always and always. Ameen Ya Rabbil Alameen. Let me stop here. So we have few minutes for comments and question. Ji. Sir, Ameen. Subhanallah, sir. Friends, please share your questions in the chat. Okay. Right, sir. We don't have any question at this time on the chat. Any friends have any question? Unmute your device, please. Any comments, any question, anything you'd like me to clarify? Please ask. Don't be shy. If not, we can definitely stop here and we can continue next week. Happy New Year to everyone. Thank you everyone for joining us on this beautiful New Year morning and evening in some of the other countries. May Mola be with you always. Thank you. Sir, I think we got a few questions in the chat. So, Okay. friends asking, can we also say the houses of light? Okay. Actually, for friends asking, houses of light is referring to what? I think friends asking for from the reference to Surah Nur. Okay. Without understanding the question fully, Nuran Allah Nur, and the Nur, the lamp, you will find in the houses of the Mu'mineen, the believers. If that is your question, to Mu'mineen, the believers. The Nur
is the Noor of the Imam, the living and present Imam, and that Noor can be, the Noor can be in your heart and in your home. And how do you light the Noor in your heart and in your homes? Number one, remember him with the belief, with the Iman. So when you remember him, when you do tasbih, giriyawazari, dua, ibadat, the recitation of the bowl, it brings the light of the Imam in your heart and in your homes. That is what is mentioned in Ayah Nur, and then next ayat, the ayat number 36 out of Surah 24, Surah Nur. If that was your question, and then this is the answer. अगर उर्दू में समझना है तो नूरन अला नूर, इमाम के बाद इमाम, इमाम के नूर का जिक्र है यहाँ पर, तमाम इमामों का नूर का जिक्र है यहाँ पर, और उस नूर को रोशन किया जाता है उन दिलों में, उन घरों में जहां पर उसका जिक्र किया जाता है. Look like somebody has their phone unmuted. Do you have any comments or question? So I think we have another question. What explanation non-smileys give for Nuran Allah Nur? Like I explained earlier, to them light upon light, नूर पर नूर, बस. क्योंकि उनके पास ना तो इमाम का इल्म है, ना ही इमाम की गाइडेंस है, ना ही इमाम के नूर की रोशनी है. उनके लिए अल्फाज लाइट सिर्फ एक लाइट है. हमारे लिए लाइट, नूर, इमाम का नूर है, और नूर अपन नूर, imam after imam after imam after imam. Remember the Farman? Let me remind you. Our tariqa, our branch of Islam is the esoteric tariqa, and the meaning is for us and us only. Ji. So another question. By accepting Mawla as Ali Allah without certainty of knowledge and without certainty of I, where do I stand? Iman. Before the certainty of knowledge, without the certainty of eyes, and before the certainty of truth, you and I, we all stand on Iman. First, accept with your Iman, with your faith, with your belief. That is the foundation of three levels: Ilmul Yaqeen, Ainul Yaqeen, Haqqul Yaqeen. Without the Imam, there is no, without the Iman, there is no foundation. समझ गए आप? अली अल्लाह अगर इल्म के साथ नहीं समझते हैं, अगर रूहानियत के साथ नहीं समझते हैं, अगर नूर के साथ नहीं समझते हैं, तो कम से कम उस पर ईमान रखें, क्योंकि ईमान उसका पाया है. Very good question, whoever is asking. Iman is the foundation. First, believe. Look in the Quran. Oh, you who have believed, believe. ए ईमान वालो, ईमान लाओ, यकीन करो कि वो तुम्हारा रब है. जी. What a beautiful question. Okay, so we don't have any questions in chat. Friends, you can unmute your device if you have any question.
We still have 5 minutes if anyone like to utilize and take advantage of this 5 minutes. All right. So let's stop here, Kamar Sahib. Inshallah, if anyone has any question, please share with us, share with Kamar Sahib, share with Nachis, and we can always can explain more in different languages or as you wish with a more detail. Thank you everyone for joining us. Thank you, Happy New Yali Madad. Year. Yali Happy New Madad. Year, Yali Yali Madad. Madad. Happy New Year. Yali Madad. Yali Yali Madad. Madad. Yali Madad, Yali Madad. Thank you, Yali Yali Madad. Thank you. يا علي مدد سوري يا علي مدد Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad, everyone. Yali Madad, sir. Madad. Yali Yali Madad. Madad, thank you. Yali Madad. Yali Yali Madad. Madad.